Hello students, now we will be continuing the further topics of the chapter 8, that is the unique world of insects and animals. So the topic that we are going to start is colonies of ants. Okay, colony of ants. Okay, you know बच्चा, you have seen कि भाई trees के पास या अपने घरों के कॉर्नर्स में there are some ants, that is ये आपकी जो चींटियां होती हैं, ये they live there and वो एक holes बना लेते हैं, they form this holes and their grounds. So this is how this ants live. Okay, they live in a corner of a house. Now what happens, रीटा के घर में ऐसे ही ants क्या होती है, कॉर्नर में उनका होल था and they were moving and they were entering in a row. So you can see the a row of this ants which is given in your books. So similarly there are many ants moving under the plant pot in the garden also, as the soil was damp there. Now when the pot was removed from its places, the ants started moving along with their eggs. So Rita's mother told her that this ants release a substance that while moving, so the other ants behind them can recognize the path. So what happens, बच्चा आपने देखा होगा कि जितनी भी आपकी जो let me draw one more things. अब क्या होगा बच्चा, ये एंट्स क्या एक रो में मूव कर रही है. अगर सपोज इसमें से कोई भी एक एंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, सपोज दिस एंट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हियर, then this ant moved here. Okay, बहुत बुरी ant बना दी ना मैंने. Okay, then suppose this ant move here, this ant again came here, and then this ant started moving here. So what happens? So this is the path that the ants has taken. This ant has taken, जो यहाँ पे थी ना उसने ये वाला पाथ लिया. So अब क्या होगा, जो बाकी की जितनी भी ants हैं इस ant के पीछे वाली, वो भी यही पाथ लेंगे. अब वो इतना पूरा ट्रैवल करके आएंगे और फिर यहाँ से आएंगे. So that's how. और ये कैसे हुआ, ये जो ant थी ना, ये जो मूव कर रही थी, इसने अपने पीछे को एक सब्सटेंस रिलीज करती है, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, जिस सब्सटेंस को ये वाली एंट कैच करती है. सो ये कैच करा, इसने कैच किया, इसने कैच किया, एंड दैट्स हाउ दिस न्यू पाथ वाज फॉर्म. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्यों यहाँ पे गई ऊपर, ये इसलिए ऊपर गई, सपोज बेटा मैंने उसे परेशान करा था ना, सो आई हैव डिस्टर्ब दिस एरिया ऑफ हर्स. सो इसने एक नया रास्ता ढूंढा अपनी फैमिली तक आने के लिए, उसे यहाँ पे वो स्मेल कैच की, दैट इज ए सब्सटेंस कैच किया, सो इसने यहाँ पे आ गया. शी वॉज फाइंडिंग आउट दैट सब्सटेंस ओनली, कि कहाँ से वो वापस अपने कॉलोनी में आ सके और अपनी रो में आ सके. सो दैट्स हाउ एंट्स मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट और इन अ स्ट्रेट लाइन्स. ओके, और ऑल्सो बच्चा जब ये जो एंट्स होती हैं आपको बाइट कर लेती हैं कभी कभी, सो यू फील दिस what happens, you feel this irritation in your body ना. क्यों irritation feel करते हो, because वो एक poisonous substance आपकी body में release करती है, and that poisonous substance make you feel pain. Okay, now this ants, they are social beings. आपको पता है हम humans social beings है ना, ants भी social beings है, इन्हें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है. So this ants, they live in groups and they have their own world also. Okay, so they make their colonies in secure places. So
जो एंट्स के ग्रुप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉलोनीज, जहां वो रहते हैं. सो ये जो एंट्स है ये अपनी कॉलोनीज कहाँ बनाती हैं? एंट्स मेक देयर colonies in, like, first they will making under the soil. Okay, soil के अंदर बनाएंगी या in tree trunks बनाती हैं, और they make their in our homes also. जहां पे भी उन्हें कॉर्नर मिलेगा, क्रीज मिलेगा, वो वहां पे अपना घर बना लेंगे. सो दैट्स वेयर द एंट्स मेक्स देयर कॉलोनीज. और आपको पता ही चल गया कि एंट्स एक रो में क्यों मूव कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, दिस एंट्स दे कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क. ओके, you know, they work collectively, and how they work, all the ants which live in a colony, वो अपना अपना काम डिवाइड कर लेते हैं कि भाई आप ये काम करेंगे, कुछ एंट्स ये काम करेंगे, कुछ एंट्स ये काम करेंगे, and they work there and they complete their own work. So on the basis of the work, so on the basis of work, ant can be categorized as. So let me draw the table for you. So work done by ants and name on the basis of the work and do. Okay, so let's complete this table. The first work is laying eggs. If an ant is laying eggs, the work is doing what of laying eggs, then the name of the ant is queen ant. Okay, now the next task that is done is in the colonies of ant is taking care of the eggs. जो एग्स की केयर करते हैं, भाई क्वीन एग एंट ने तो एग्स लेकर दिए, सो जो केयर करते हैं एग्स, उन एंट्स को हम कहते हैं वर्कर एंट्स. ये खाना लाना ये सब करते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड वर्कर एंट. Next task that is performed in the colonies of ant is to safeguard the eggs and their home, and that ant is called soldier ant. आपको पता है बच्चा, एक कॉलोनी में सिर्फ एक क्वीन एंट हो सकती है. ओके, नो वन एल्स विल बी अ क्वीन एंट देयर. सो बाकी सारी वर्कर और सोल्जर एंट्स होती हैं. ओके, so this is the classification of ants on the basis of the work they do. Okay, now we'll be discussing what are the methods by which we can protect ourselves from this ants. Okay, there are various methods that are employed जिससे हम अपने आप को ants से बचा सकते हैं. Okay, okay, now you know this salt or salt water spray is used to keeping the ants away. बच्चा, नाउ डेज हम इंसेक्टिसाइड्स भी यूज कर रहे हैं, बट यू नो इंसेक्टिसाइड्स यूज करने से एंट्स तो मर जाएंगे, बट इट इज ऑल्सो हार्मफुल टू अस ऑल्सो. ओके, नाउ
बच्चा, आपने कभी कभी देखा होगा कि भाई आपके एल्डर्स या आपके एल्डर लाइक कोई लोग है ना, दिस what happens, they scatter this roasted wheat flour at home in the homes of ants. Why they are doing this? This is called aate ka kasar. The scattered roasted wheat flour is called aate ka kasar, and they are spreading this kasar on this colonies or houses of ants. Why this is done? So this was done because this belief that we should arrange food for the other organisms also, which cannot organize their foods by themselves. है ना, हमें हमारे से छोटे बीज की हेल्प हमेशा करनी चाहिए. ओके, ऐसे ही बच्चा हम क्या करते हैं, पीपल उनको घी, शुगर या व्हीट फ्लावर देते हैं. ऐसे कोई एक और एनिमल्स आप ढूंढिए जिनको पीपल फूड अरेंज करके देते हैं, लाइक माइस. ओके, mice are given foods, bananas are given to this monkeys. So these are different types of animals which we provide the food to them. Okay, now students, these birds and animals also have the power to see, hear, smell and speak and feel. So some birds like eagles, vulture and these falcons can see their prey from miles. And dogs, animals like dogs have this very good sense of hearing, so they can they can hear even a sound at low frequencies also. लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स हमने अभी डिस्कस किए. हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स वो साउंड्स होते हैं बच्चे जो हम नहीं सुन सकते है ना, और लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स भी होते हैं कुछ जो हम नहीं सुन सकते. देयर इज अ रेंज जिसमें हम ह्यूमन सुन सकते हैं. उस रेंज से ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी कहा जाता है और उस रेंज के नीचे उसे कहा जाता है लो फ्रिक्वेंसी. Okay, so this animals like dogs can hear the low frequency sounds also. Okay, and now let's discuss one more thing. आपको पता है मॉस्किटोज आपको किस तरह से फाइंड कर पाते हैं? How this mosquito find you? मतलब हमारी बॉडी में से we emit some odor, है ना, हमसे स्वेट आता है तो उसकी स्मेल होती है. सो जो मॉस्किटोज होते हैं ना उस स्मेल को और हमारी जो हीट होती है बॉडी हीट को उसको कैच करते हैं और इसलिए हमारे को आके काट लेते हैं. Okay, so how does dogs recognize someone? Because of this, they have this strong sense of smell. वो एक स्मेल को एक इंसान से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट कर पाते हैं and they can easily identify different persons. Most of the birds have their eyes on the sides. So क्या होता है, जो birds होती है ना, इस साइड की आई से इधर का देख सकते हैं, इस साइड की आई से इधर का देख सकते हैं. ओके, बट कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसे एक टाइम पे अलग अलग नहीं देख सकते. सो व्हाट दे डू इज दे मूव देयर नेक, है ना, उनकी नेक पूरी पीछे तक मूव हो जाएगी, उनकी बॉडी आई रहेगी, उनकी नेक मूव हो जाएगी. सो दैट्स हाउ दे कैन सी एवरीवेयर. बच्चे, देयर आर सम एनिमल्स जो दिन में जगते हैं, दिन में जो जगते हैं ना, दे कैन सी सम टाइप्स ऑफ कलर. बट जो एनिमल्स नाइट में वेक करते हैं लाइक बैट्स एंड आउल्स, they can only see the colors in black and white only. Okay, let's discuss one more thing. How does a bird warn other birds against an upcoming danger? आपको पता है कैसे warn करते हैं? Either by they produce some sound or by flying, or they produce some sound by walking. Similarly, how do eagles and the sprays, vultures find their food? By seeing. They can see from a very long distance, so बहुत तेजी से fly करके आएंगे and they catch their prey. Okay, and how do they, fishes warn each other against any danger? अगर fishes को ऐसा लगता है कि कोई danger है या कोई problem हो सकता है, they release a chemical and this chemical is catched by other fishes and they know that there is a danger around it. Okay, and आपको पता है बच्चे ये lizards कहाँ चले जाती है विंटर्स में? आप लोगों ने विंटर्स में देखा होगा कि लिजर्ड्स नहीं होती. एक पीरियड ऑफ टाइम होता है बच्चा जब कुछ एनिमल्स उस पॉइंट पे सोते हैं. ओके, दे कलेक्ट देयर फूड, दे ईट देयर फूड फॉर अ पीरियड एंड देन फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम विंटर्स में मोस्टली वो गायब हो जाते हैं. दैट इज दे गो ऑन अ पर्टिकुलर सीजन टू टेक अ लॉन्ग स्लीप. ओके,
So this completes a chapter, that is the unique world of insects and animals. Now I will be giving you some questions regarding this chapter. Okay, the first question is, classify the ants on the basis of work. The next question is, how do ants move in a row? The next question is, what measure you can take to protect from ants? For which animal do people provide, or you can say arrange food other than ant? Okay. The next question is, how do mosquitoes find us? Okay. The next question is, how do fishes and birds warn each other of upcoming danger? Okay. The next question that I'm giving you, which animal take a long sleep in a particular season? Okay, so this is the question that I'm giving you. So these are all the questions that I'm giving you that you all have to do by yourself. Okay, the first question is, classify the ants on the basis of work. I have given you कि हम ants को 3 types पे classify कर सकते हैं, so you have to classify that. Next question is, how do ants move in a row? मैंने आपको बताया था ना, वो पूरा chemical substance release होता है उसके बारे में, so you have to write about that. Next question is, what measures you can take to protect from ants? Salt water, salt, or you can use this insecticide also. For which animal do people arrange food other than ant? So I have given you few examples, so try to find some other examples also. Now, how do mosquito find us? I've told you ना कि mosquitoes हम लोगों को कैसे find करते हैं और कैसे bite करते हैं. So now, how do fishes and birds warn each other of upcoming danger? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, so you will be all able to answer all these questions very easily. हाँ, बहुत easily आप ये answers कर पाएंगे. Last question is, which animal take a long sleep in a particular season? ठीक है?
So it's an answer is given in the book also, and you can also have an idea about it. Okay. So this completes a chapter, that is the unique world of insects and animals. We'll be starting a next chapter.